सो सिंज्ड हेयर जो होता है ड्यू टू बर्न या फिर फायर आर्म इंजरी की वजह से, सिंज्ड जो हेयर होता है वो स्वॉलन होता है, फ्रेजाइल होता है, कर्ल्ड होता है, ट्विस्टेड एंड हैव अ पर्टिकुलर ओडर. पोस्टमार्टम रूट बैंडिंग क्या होता है? मे बी सीन इन डिकम्पोज बॉडी वेर इन द ओपेक बैंड अबाउट 0.5 millimeter above the root bulb can be observed with transmitted light microscopy. मेडिको लीगल एप्लीकेशन क्या होता है ये बाल का? सो आइडेंटिफिकेशन में काम आता है. जो हेयर होता है उसकी वजह से वी कैन डू आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. ना 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 जानो ना जानो ना जानो ना. जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस. ओके, सो लेट्स गेट अहेड विद इट. तो क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन में बाल का बहुत काम आता है. टू we can use this for identification purpose. So here remains identifiable long after the commission of crime and provides valuable physical evidence. In homicidal cases, presence of hair in the grip of the hand of the deceased is cadaveric spasm. In cadaveric spasm may help in identification of the assailant. So जो assailant है उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं by hair. Now establish relationship between offense and offender and the victim. So जो बाल होता है, the suitable hair can be compared microscopically with known hair sample to determine if they could have come from the same source. This augmented by empty DNA sequence. So it is an important clue when similar hair may be detected on the alleged weapon and on the body of the assailant. So in rape and sodomy cases में pubic hair of the accused may be detected on the victim and vice versa. Now in bestiality में animal hair may be found अराउंड द जेनेटेलिया के अराउंड एनिमल हेयर पाया जाता है. बेस्टैलिटी में बेसिकली एनिमल के साथ सेक्स करता है इंसान. सो उसके जेनेटेलिया बॉडी क्लोथिंग ऑफ द अक्यूज में पाया जा सकता है. ठीक है. सो इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है कि हेयर ऑफ द विक्टिम मे बी फाउंड एडहेरेंट टू द ऑफेंडिंग कार. विक्टिम का हेयर कार में मिल सकता है. ठीक है. ये सब हो सकता है. नाउ नेचर ऑफ द वेपन कैसे पता चलता है? सो इन हेड इंजरी हेयर मे बी क्रश्ड और कट डिपेंडिंग अपॉन वेदर ब्लंट है या फिर शार्प कटिंग वेपन वॉज यूज्ड. द नेचर ऑफ असॉल्ट पता चल सकता है. वेरियस ट्रेस एविडेंस लाइक स्टेन मे बी अटैच्ड विथ हेयर. So it must be carefully looked. It helps in differentiating burns from scald. Hair is brittle, singed and charred with large round vacuole at the point of burning which is absent in scald. Burning में क्या होता है, जो बाल होता है ना वो पूरा जल जाता है. But scald में ऐसा कुछ नहीं होता है. टाइप ऑफ स्टेन. सेमिनल स्टेन जो होता है वो सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताता है. ब्लड अगर स्टेन के रूप में मिला तो वो इंजरी बताता है. सलाइवा मिला तो एस्फेक्सियल डेथ. मड मिला तो स्ट्रगल या आरटीए बताता है. कार्बन पार्टिकल मिला तो बर्न फायर आर्म इंजरी बताता है.
dye मिला तो concealment of the natural color. Now singeing of the hair जो होता है indicates burn या फिर close range firearm injury. अब alcohol testing जो होता है, hair alcohol testing is used to know whether or not a person has consumed alcohol at a frequent and excessive rate over period of time. The concentration of ethyl gluconide and fatty acid ethyl ester जो होता है found in the hair sample reflects the consumption of alcohol over the period covered by the sample. So, time since death can be estimated from the growth of scalp hair या फिर beard. Growth rate क्या होता है 2.5 millimeter per week या फिर 0.2 millimeter per day if the date of last shave is known. It is possible to calculate for what period the deceased survive after his last shave. एज और सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाल से. कॉज ऑफ डेथ भी कर सकते हैं, जैसे पॉइजन सच एज आर्सेनिक, थैलियम या फिर लेड जो होता है कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द हेयर. समटाइम्स एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अकर विथ कंपाउंड्स लाइक alanine derivative including paraphenylene diamine and rosorcinol found in the hair dye. So is this human hair or animal hair difference? इसका मेडुला इतना सही है, एनिमल हेयर है. सो डिस्क्राइब एंड डिस्कस सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन देख लेते हैं. एंड वी जस्ट हैव वन मोर पेज, राइट? यस यस यस. सुपर इम्पोजिशन देखने से पहले ना लेट्स रीड दिस केस. इंटरेस्टिंग केस क्या है? सो शीना बोरा एक एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन मुंबई थी. went missing on April 2012. After a month, the police in Raigad found a body after villagers complained of a foul odor. No identification was made and the remains were sent to the hospital in Mumbai. No link was made with the Sheena Bora case. She was allegedly administered a sedative, strangulated inside a car and then burnt and dumped in Raigad by her mother, co-founder of INX Media, with the help of ex-husband and driver. The murder came to light 3 years later in 2015 after the driver spilled the beans. Skeletal remains were exhumed and the police found bones including a skull from the spot. Digital superimposition was carried out to match the skull and mandible recovered. 4 sets of live photograph of Sheena with different facial profile and respective corresponding profile skull photograph were used. The computerized superimposition was done using software which involved cropping and additional preparing. It also compared the exactness over visible teeth of the victim in live photograph with smile and visible front teeth and the corresponding teeth in the skull. The forensic medicine expert opinioned that all the landmark and facial characteristic along with teeth superimposition were found correctly matching and identified the remain of hers. A DNA test has also confirmed that the bone was Sheena's remaining. So इस तरीके से उसकी माँ पकड़ी गई, सुपर इम्पोजिशन किया बोन से. So superimposition क्या होता है? Technique applied to determine whether the recovered skull is that of a person in the photograph. Technologically, skull photo superimposition have passed through 3 phases: photographic, video or computerized assisted superimposition technique. While performing photographic superimposition, the comparison photograph is enlarged
to the size of the unknown skull, and then the skull is positioned in the same orientation as the facial photograph. इस तरीके से करते हैं. उसके बाद recently computer assisted superimposition has become a popular method while digitalizing the skull and facial photograph using a video computer with appropriate software, and then compare the two images morphologically with image processing. The complete skull is required to obtain positive identification without the mandible. It can positively be identified as the presumed person even if a good match is seen in the skull superimposition image. The coincidence of dentition between the skull and facial photograph. So if incisors canines अगर दिख रहे हैं could lead to positive identification. When evaluation anatomically consistency between the parts, superficial attention should be paid to the outline, the facial tissue का thickness at various anthropometric points, and the positional relationship between skull and face, eyebrow to supraorbital margins, eye to orbit, nasal to nasal aperture, lips to teeth, and ear to external auditory meatus. If they are well matched with the other, it can only be stated that the skull could be that of the photographed person. Test is of a more negative value because it can be definitely be stated that the skull and photograph are not those of the same person. सो नेगेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नहीं है, इसका है कि नहीं है हम लोग ये इतना कंफर्म से नहीं बोल सकते, बट इसका नहीं है ये कंफर्म से बोल सकते हैं कि ये बोन जो है इस इंसान का नहीं है. डिफाइन एंड डिस्क्राइब establishment of identity of a living person bite mark से. Describe and discuss identification of criminal unknown person dead bodies from the remain teeth से. सो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में आ जाते, दांत से कैसे पता करेंगे कि वही इंसान है कि नहीं. तो अब पूरा हम लोग दांत का देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग एक मिसलेनियस मेथड देखेंगे जिसमें क्लोथ्स देखेंगे, ऑक्यूपेशनल हैंड राइटिंग, स्पीच देखेंगे, एंड द चैप्टर विल एंड देयर. सो ओडोंटोलॉजी मतलब दांत के बारे में होता है. सो डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ डेंटिस्ट्री टू एड the administration of justice. So the work of forensic odontology includes identification of unknown bodies through dental records, identification of bite marks on the victim of attack, comparison of bite marks with the teeth of the suspect, and presentation of the evidence in the court as an expert witness, identification of bite mark on the substance such as wood, leather या फिर food stuff, age estimation of living individual, कैडेवर और स्केलेटल रिमेन्स का, वो भी दांत से कर सकते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स ये कैसे करेंगे? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज ड्यू टू वायलेंट क्राइम, RTA, नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर, मास कैजुअलिटीज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विद एविएशन डिजास्टर जो होता है, और ड्राउनिंग, बर्न, मर्डर, सुसाइड, डेड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, rely on dental evidence to positively identify the body. Postmortem dental remains can be compared with antemortem dental record, including written notes, study casts, radiography to confirm identity. So, individuals with numerous and complex dental treatment are often easier to identify than those with little say no restoration treatment. So once the postmortem record is complete, a comparison with antemortem dental record can be carried out. A range of conclusions can be reached when reporting a dental identification. Even if only a few teeth are available, odontologists can determine age, smoking habits, state of oral hygiene, identity of individual feature which may match with the antemortem record.
In case where the subject has no teeth, useful information can still be obtained from the study of any dentures and by x-ray of the mouth and skull. So recent advances in dental identification in problem cases, a variety of techniques are used to assist in the identification issue. These includes incremental line and other histological studies. As a Mapples noted in the second molar, best histological aging technique is scanning electron microscopy with or without energy dispersive X-ray analysis, metal ratio analysis in bone and teeth, especially magnesium by zinc ratio, serological studies for blood group, serum protein, and polymorphic enzymes. DNA analysis, dental pulp material is a good source of DNA analysis. Two vital teeth, preferably molar, canines, premolar, are extracted and sent for examination. Now, bite mark से क्या पता चलता है? So, guys, I'll read sometimes later. Okay, bye.